Let us have double breathing with stretching relaxation, 2 times in sitting position and 2 times in standing position. When you are practicing double breathing, you must have this thought. We are very fortunate that we have compact spiritual text written by Swami Shree, Jnanavatar. This spiritual text is written with the direction of Mahavatar Babaji and with the blessing of Lahiri Maharshi. Important thing is this spiritual text is having very less volume, very less weight, very easy to handle. But how to understand it? Through the practice. You cannot understand it by reading. By reading you will get little bit, just like we are hungry. You want to eat 200 gram content of the food, but if you have only 5 gram, how you will feel? In the same way, when you will read it without practice, we will get spiritual content very little. Therefore, when we read it with the practice, then you will experience going into this called bliss, more vitality, power, knowledge, peace. अच्छी तरह से याद रखिए कि हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं. एक ऐसा सद्ग्रंथ है जो कितना हल्का है, आकार में कितना छोटा है, वजन में कितना कम है, और लिखा गया है ज्ञानावतार स्वामी जी. और किसके आशीर्वाद से लिखा गया? महाअवतार बाबा के निर्देशन में उनकी पूरी सहायता हुई और साथ ही साथ लहरी मासी की ब्लेसिंग, उनका आत्मिक प्रेम ने सद्गंध को प्रकट किया है. जब आप इसके थ्रू जाइए तो इसमें आपको 4 चैप्टर मिलता है. पहला चैप्टर है ये जानने के लिए कि हम आप कौन हैं, ये दुनिया क्या है. उसको पढ़ करके थोड़ा सा एक ऐसा ज्ञान मिलता है जिसको आभास ज्ञान कहते हैं, जिसको डायरेक्ट परसीव्ड नॉलेज नहीं कहते हैं. उसको समझ लेने पर थोड़ी आइडिया मिलती है दुनिया क्या है. उसके बाद फिर हम जीवन का लक्ष्य बनाते हैं. जीवन का लक्ष्य बनाने के बाद फिर उस पर कैसे चले, उस पर चलने पर जो अनुभव होता है कैसे व्यक्त करे. इस तरह से 4 चैप्टर में है ये. पहला चैप्टर है वेद, दूसरा है लक्ष्य की अनुभूति, हमारा लक्ष्य क्या है, तीसरा है लक्ष्य की प्राप्ति, और चौथा है लक्ष्य पर जब चलने लगते हैं हम तो जो अनुभव होता है उसको कैसे हम प्रकट करें. ये परफेक्ट है. ये इसके इंट्रोडक्शन में जो कुछ दिया गया है संपूर्ण ब्रह्मांड का संक्षिप्त ज्ञान है उसमें. आइए हम पहले टॉपिक जिसको वेद कहते हैं, गॉस्पेल कहते हैं, उस पर हम आपको ले चलते हैं. Try to understand again. This spiritual text is the compact, complete text. Suppose that in the beginning we do not know who is God. We do not have interest to know who is Creator. Who am I? The first chapter deals with the fact about this universe, about self, about external universe. That is called inference knowledge, indirect knowledge. Direct knowledge you perceive when you practice it. Therefore, after understanding something about this universe, about self, about others, then we create an idea. We create an idea, what is our goal? Then make a goal of life.
After making goal of life, I have to do this. Then we need technique. How to accept, how to fill that goal of life. That's the third chapter, technique, sadhana, procedure. Then you start practicing it. When you start practicing it, then what you realize, you experience ultimate truth. When you start experiencing ultimate truth, that is called revelation. Then how to distribute it? That is in the fourth chapter. Today I am going to give you some important message related to chapter number 1, Gospel. Most important thing is this. What I am going to tell it, it is already written. Written not by a philosopher, by a writer, by a poet. Written directly by realized master who trained Paramahansa Yogananda. Paramahansa Yogananda demonstrated effect of Kriya Yoga, living body willingly and living body in the pure form. Body was kept weeks after weeks, was in observation, no decay was there. It means what is the teaching of Swami is par excellence, complete, demonstrated very well by Paramahansa Yogananda. It is our duty, our responsibility to demonstrate the effect of Kriya Yoga. Therefore, you should also decide. We will live willingly. You are not going to live in hospital. We are going to leave body after congregation, after Last Supper, after giving message, making people fully satisfied. After that we will depart. This let us decide all of us to reach to that stage. अच्छी तरह से याद रखिए कि जो कुछ स्वामी गिरी की शिक्षा है उसका प्रभाव परमहंस योगानंद ने दिखाया। 32 वर्ष से सेवा करने के बाद जब जाने का समय हुआ, एक बहुत बड़ा भोज हुआ, संदेश देने के बाद परमहंस योगानंद ऐसे शरीर छोड़ करके चले जाते हैं और सिद्ध कर देते हैं कि शरीर प्योर फॉर्म में है, एकदम अहिंसा की शक्ति से तृप्त है। इसलिए शरीर पड़ी रही, हफ्ते पर हफ्ते बीतते गए, उसमें कोई दुर्गंध नहीं आई, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस तरह से सबसे बड़ी गुरु की भक्ति यही है, हम गुरु की शिक्षा को दिखा सके। परमहंस योगानंद सिद्ध कर दिया कि ऐसे ही शिष्य होना चाहिए जो गुरु के पूरे ज्ञान की अभिव्यक्ति कर दे। आज इन्हीं सब के कृतित्व से क्रिया योग यहाँ तक है। आइए हम लोग गॉस्पेल पर आए। नाउ कम टू द गॉस्पेल। इन द गॉस्पेल वी लर्न everything came from God. In fact, God has become all. Eko aham bahushyam. This is the sutra very well explained in the first chapter, Gospel. And explanation is like this. Let us accept God is, we are writing God as a chit. And chit means, we write in Hindi like this. Chit is called omniscient consciousness, complete knowledge. And Chit is also called, this is called bliss, ever new joy. Ever new joy we call Paramanand. This is also called immortal, Sat. Sat means eternal, everlasting. This is the nature of Creator, Parabram. Now this Creator has become all. This Creator is transforming all content within, power, knowledge, peace, bliss, into a divine creation
That is called Kutastha. This Kutastha is called Purushottam. What is the meaning of Kutastha? Purushottam, complete love for all, equal love for all. The first manifestation of Parabrahma, Chit, bliss consciousness, Sat, omnipresent spirit in the form of Kutastha. After that again next transformation, it came children of God. Children of God is generally known as Son of God. Son of God means S-O-N. This is not. Son of God here means S-U-N. Son of God means something who represents God exactly, like sun. Moon is called different. Moon is not able to reflect the sunlight exactly the same. Therefore, Son of God explained in Scripture, it should be S-U-N of God. Children of God is called the Son of God. This is the next manifestation. Next manifestation is this, we call it Purus. After that we start experiencing next creation, because God knows how to become infinite variety. The next came, that is called the ego. Now from here, because the power, knowledge, peace exists in God, is become ego. Now here we feel separation. I and God are two. When I and God are two, we feel separation, but still we feel love of God. That love of God is expressed in the form of chitta. This chitta is expressed in the form of chitta. Because we feel here separation, I and God are two, we develop fear. We want security, we want protection. In order to protect ego and chitta, we have got two other creation. One is called wisdom, and next is called the mind. This wisdom and mind is trying to pull ego downward, away from God. But the love of God, Kutastha, and love exists in the sons of God. S-U-N-S, sons of God, is pulling the ego up. Now here pull and push is visible. We see in the form of attraction and repulsion force. Now in order to, because this attraction towards God is very powerful, but God is known how to maintain creation. In order to maintain existence of creation, then mind should stay in the form of mind. Buddhi should stay in the form of buddhi, wisdom. Ego and chitta also stay. They should not merge with the chit consciousness. The next creation came, that is called sense organs. Five organ of actions. The next 5 tanmatras. Now these 15, they are keeping wisdom, mind, ego, chitta,
away from God. But one power of God, great attractive force we call Purushottam Kutastha, and the power exists in the form of sons of God, is pulling up. Now, it is nature of God is to maintain existence of creation. But this is not so powerful that they can stay in this form. They have more attraction, sense organ of action, tanmatras, and wisdom and mind, chitta and ego have great love for omnipresent consciousness. And we need some more creation so that this creation to stay as such should not merge with the chit, with the bliss, with the God. Then what happens? Now next 5 is created. 5 gross object. Sky, air, fire, and water, and earth. These 5. Now here 20, and here is the 4. This is the wisdom, ego, chitta and mind. This is the 4. This 24 is called some creation which is having distance, space between God and this creation. There is space. This is called the ego. Therefore we feel distance from God because we have this thought, without sky we cannot live, without water we cannot live, without air we cannot live, without solid food we cannot live. Because of this thought, we feel separated permanently with the God. But we have great desire to feel oneness with God. Then we have craving all the time. What craving we want? We want to rule the country. We want to become Prime Minister. We want to become President. Intuitively, we have this knowledge to have completely control of these 24 elements. But this message, we want to control 24 elements, we want to create it. Now we start making this power. We are working through this power. We want to control you. We want to control everybody. We make a law. I want to control. Therefore, I should become the president or prime minister or governor or chief minister, premier. I know what is the right, wrong, then I will be judged. Only judgment is given by God, because that God's power is charged. All these elements, they are charged with the God's power. Therefore, we have got this idea, I want to become judge. I want to become justice. Therefore, all the elements 24, they want to work like God. But they cannot work. Therefore, there is a fight. In order to become president, prime minister, premier of the province, chief minister, or governor, there is so much struggle. In order to become judge, so much struggle. We want to control, we want to become police. We want administration. From where all these activities arises? From one aim, we want to work like God. Then who is God? God is king. And the whole cosmos is kingdom of God. And I also want to become king. I want to make kingdom. Lucknow is kingdom of Uttar Pradesh province. Delhi is kingdom of India. Washington DC is kingdom of USA. Ottawa is kingdom of Canada. Like this, I have made also kingdom, but this is illusion. We are caught in this illusion, and therefore there is fight, there is violence. After knowing this, what we want to remain connected with the Chit, with the bliss, with the Sat. How to connect it? Feel head to toes. What you feel, accept it is presence of immortal consciousness. Try to walk and sit and stand and run and work and rest in such a way
that you must feel head to toes. Various changes within is feeling joy. Try to change your lifestyle. Try to live in such a way that each and every moment you must focus on head to toes. Whatever change various things, accept it in presence of immortal consciousness. Now science has proved energy is immortal. Energy transforms into atom. Atom is immortal. Atom together molecule. Molecules are immortal. For example, water is immortal. Try to destroy, you cannot destroy. You can change its form. Okay, it is true. Then let us feel head to toe. Accept this truth. What we feel is immortality. Practice it again and again. Then we are connected with the Chit, with the God, with the one great message, immortality. Therefore, have full-time awareness when you are walking. Have deeper attention, concentration on each and every point from tip of the nails to top of the head. Feel it more and more. When you feel breath, have the same feeling. What I feel breath, immortality. What I feel, heaviness, lightness, this immortal consciousness. Heat and cold, immortal consciousness. I am feeling hunger and thirst. I am thirsty. I am hungry. Perception of hunger and thirst is immortality. I start drinking in order to satisfy thirst. We want to eat to satisfy hunger. The process of eating and during eating, after eating, all perceptions is called immortality. When you connect your consciousness completely with this thought, whatever you feel is immortal, then you will realize each and every part is connected with the omnipresent God. At the same time, you have to maintain this. Oh, I want to feel omnipresent God. Moment I felt, I melted. I disappeared. When I disappeared, I melted. I will never have desire again to become that gross structure because there is problem in that. What is the aim of this human life? To remain one with the Chit, at the same time try to maintain existence of 24 elements. The aim is to become like Mahavatar Babaji. If you have physical form, you have to maintain it permanent. If you maintain permanent, then so many human beings will be Mahavatar Babaji. No. If you become Mahavatar Babaji, you will realize both forms become one. If 1,000 person, it became Mahavatar Babaji, all 1,000 became one. If 10,000 Mahavatar Babaji, they all become one. Therefore, Mahavatar Babaji will remain one all the time. Therefore, we should not have this illusion that many will be Mahavatar Babaji. No. Many will become one structure. This is called the little gospel. Why we have problem in the life? Because we believe in thinking of mind. Mind is always blind. We believe in reasoning power. Reasoning power is limited. The mind is creating problem. The reasoning power is creating problem. Then what I have to do? I am deceived by mind, by reasoning power. I am deceived by so many things. Eyes are deceiving. I feel it is distance, but there is no distance. Everything, touch is deceiving, leg is deceiving, all are deceiving. 5 sense organ, 5 organ of action, all are deceiving. Very troublesome. In order to have safe journey, feel head to toe all the time. What you feel, accept the presence of immortal consciousness. When you tense, relax, right leg, or right arm, left arm, as you practice discharging 1 to 42 steps. Doing that, whatever changes you feel, try to accept all presence of immortal consciousness. Then you will realize these 24 elements will be connected with the bliss consciousness, with the complete knowledge exists in God, with the complete power exists in God. We will realize all the time very well connected. Then we will have no problem. Your mind is connected with God, your reasoning power is connected with the God,
5 sense organ, 5 organ of action, all are connected with the God. Sky element, air element, fire element, water element, earth element, all are connected with the God. This is what we want. Experiencing this eternal connection all the time is called Kaivalya. This is our aim. And when attain that stage, we become perfect sannyasi. Because you know how to experience immortality. Now you have no fear. This is called the first chapter, Gospel. After knowing this, there are so many things I will tell you further. Then we have made our aim of life. I want to remain connected with the God. Then we need practice. Practice every day, you are doing it. Keep on practicing it more and more. Our concentration on head to toes, on breath, on Brahma, on divine cave, head and spine, altar of God. After this practicing concentration on holy vibration, Om, then practicing initiation steps. All these practices is called the dedicated journey to reach towards one stage, Kaivalya. In the stage of Kaivalya, what we will realize? That we are one with all creations. Then we will know how to create anything, how to make a change, how to preserve created things. This is important point, you should remember it. Then what is now goal? Practice and practice. Try to practice slowly, slowly, deeper, deeper, more and more, till you realize how to practice all the time. In working stage, in resting stage, all the time. When we are sleeping and dreaming and deep sleep, all the time how to practice. And if you have real effort, if constantly you are practicing, one day will demonstrate. You have become Mahatar Babaji. Then what will happen? You and Mahatar Baba will be one. You will not have to figure. But our ego wants, no, I want to feel too. Because we have not reached to that stage Purushottam. Purushottam is called Kutastha. What Lahiri Mahasaya said. Do not come and run and to see my physical form. I am always in your Kutastha. What Jnanavatar Samyukta Sugri said to Paramahansa Yogananda. When you are in Kutastha, you will see me. If you want to see the God, hate no one. Complain no one. Do not say anybody is small. Do not compare. Pay highest respect and honor to all creations of the cosmos. How to start it? Very easy. First feel head to toes. Nearest of near creation is the legs, arms, back, abdomen, chest, neck, face, head. And try to feel each and every things and pay highest respect and honor. Never compare that this change is good or that change is good. All varieties of changes we feel during working or resting, all are the best. All are supreme. All are immortal consciousness. Just practice this again and again. This is very simple to practice. But problem is that we are restless. We want everything is just immediate. Okay, all right. Why we want everything immediate? Because we don't enjoy practice. Suppose that you are eating very good sweet. You like very much. After many years you got today. When you start eating it, you want to eat more. Oh, you have diabetes. Who cares? I will eat more from tomorrow. I will not eat. Even heavy diabetic condition, we are ready to eat it. But we pray to the God, I want to eat a lot. I do not want to become sick. That is why what we feel in eating anything. Remember, if in the practice you will have that joy, you will never ask this, I want immediate reach to the stage of Kaivalya. Then we will have only one desire, let us enjoy, practice and practice and practice. We will forget anything else. Moment you forget anything else, enjoy the practice alone, then you will realize you are in the state of Kaivalya. अच्छी तरह से याद रखिए कि
जब होली साइंस लिखी गई, कितनी महत्वपूर्ण टेक्स्ट है। पहला चैप्टर लिखा गया वेद। वेद क्या है, हम कौन, आप कौन। बच्चा पैदा हुआ, प्रश्न करता है ये क्या वो क्या, चिड़िया देखता है चिड़िया क्या है, पेड़ क्या है, ये जानवर क्या है, ये कौन है वो कौन है, तरह तरह के प्रश्न आते। एक क्यूरियोसिटी होती जानने की, लेकिन पता नहीं क्या है। तो बाहर की चीजों को जब हम जानने लगते हैं तो उसी जानने की क्रिया को कहते वेद का ज्ञान। इसलिए पहला चैप्टर है वेद का। उसको जानने के बाद पता चलता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने को जोड़ें किससे, अनंत शक्ति से, अनंत ज्ञान से, परम आनंद से, अमृत से। ये नेचर किसका है, पता चलता क्रिएटर का, रचनाकार का। रचनाकार कौन है, उन्हीं को भगवान कहते हैं, उन्हीं को परब्रह्म कहते हैं। ठीक समझ में आ गया, तो परब्रह्म है, भगवान है। ऑल राइट, फिर आगे क्या। अब हमको टेक्निक चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस आप रोज कर रहे हैं, सिर से पैर की अंगुली तक। इस पे कैसे एकाग्रता बढ़ाएं, 1 से लेकर के 42 तक रिचार्जिंग करते हैं। इसमें एकाग्रता का विस्तार कैसे करें, श्वास में मेडिटेशन करते हैं, श्वास पर ध्यान करते हैं। और एकाग्रता कैसे बढ़ाएं, भ्रूमध्य साधना करते हैं। और कैसे बढ़ाएं, आल्टर ऑफ गॉड, हेड और स्पाइन में एकाग्रता बढ़ाते हैं। और कैसे बढ़ाएं, फिर दीक्षा वाली क्रिया करते हैं। जो सारा अभ्यास से करते हैं, ये अभ्यास का लक्ष्य क्या है कि हम अपने में एकाग्र होकर के सच को समझें कि स्वरूप क्या है। ये परब्रह्म के अंदर जो शक्ति है, ज्ञान है, शांति है, आनंद है, वही प्रकट हो रहा है इस रूप में। जब अभ्यास करने लगते हैं तो होता क्या है, देखिए हम आपको एक रेफरेंस दे रहे हैं गॉस्पेल का। ये परब्रह्म है, जिन्हें चित्त, परम आनंद और सत कहते हैं। एको हम बहुश्याम, परब्रह्म एक है, अनेक रूपों में प्रकट हो रहे। प्रकट होने क्रिया में जो पहला प्रकटन हुआ वह है कूटस्थ, और इसी को पुरुषोत्तम कहते हैं। कूटस्थ क्या है, वो प्रेम है जिसको अनंत कहते हैं, उसमें घृणा है ही नहीं। कूटस्थ में कब रह पाएंगे, जब हमारी शिकायत खत्म हो जाती है, हम किसी से कोई शिकायत ना हो, और सभी को इतना सम्मान करें जैसे परब्रह्म को किया जाता है। कल्पना करिए कि भगवान आ जाएंगे तो कैसे सम्मान करेंगे, उतना ही सम्मान सबका करना है। ऐसी स्थिति में अपने अंदर कूटस्थ की शक्ति जो सो रही है जगने लगती है। फिर कूटस्थ चूंकि एको हम बहुश्याम, परब्रह्म एक से अनेक होने की इस क्रिया में निरंतर सेवारत है। तो फिर कूटस्थ के बाद अगली जो रचना हुई उसको कहते हैं पुरुष। पुरुष को कहते हैं परब्रह्म की सभी संतान है। हम कहते हैं वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। चिल्ड्रन ऑफ गॉड को सन कहते हैं, सन कहते हैं सूरज को, SUN। वी आर सन्स ऑफ गॉड। सन्स ऑफ गॉड क्यों कहते हैं, क्योंकि हम जो सुनते हैं एग्जैक्टली हम कह सकते हैं, हमारे समझने में गलती नहीं होती है। तो जब हम क्रिया का अभ्यास करते करते अनुभव कर लेते हैं हम परमात्मा के संतान हैं, तब अज्ञानता खत्म हो जाती है। फिर एक से अनेक होने की क्रिया में इसके बाद अगला जो क्रिएशन हुआ वो है जीव भाव, ईगो है। ईगो को जीव भाव कहते हैं। जैसे जीव भाव प्रकट हुआ तैसे अनुभव हुआ, अरे हम और परमात्मा दो हैं। हम हैं, परमात्मा है, हम भक्त है, भगवान है, हम छोटे हैं, वो बड़े हैं। तो ये भाव आते, इसी को कहते हैं अहंकार, इसी को कहते हैं ईगो, इसी को कहते हैं जीव भाव। सारा कष्ट का कारण यही है, परब्रह्म से दूरी की अनुभूति। लेकिन चूंकि परब्रह्म की शक्ति का एक गुण है, जो चीज बन जाए उसकी सुरक्षा हो। अब जीव भाव आ गया, प्रकट हुआ, तो विष्णु की शक्ति जो परब्रह्म की ही शक्ति, इसकी सुरक्षा कैसे करेगी। इस जीव की सुरक्षा करने के लिए प्रेम है, जिसको चित्त कहते हैं। इसी चित्त को हृदय कहते हैं, हृदय का प्रेम। ये हृदय का प्रेम क्या है, ये निरंतर अपने अंदर विद्यमान है। ये
ये चित्त इसको है, ये चित्त जो लिखते हैं इस तरह से है, इसमें दृढ़ता है। चलो चित्त और ईगो हुआ, चित्त की वजह से ये ईगो की शक्ति जुड़ी है परब्रह्म से, लेकिन उसमें इतना अच्छा लगता है कि तो उससे मिल जाएगी। परब्रह्म का काम क्या है? एको हम बहुत श्याम। ऐसा काम क्यों करते हैं? क्योंकि उनको आता है करना, यही लक्ष्य है। तो चित्त और ईगो बना रहे, ये एकदम मर्ज न हो जाए, उसके लिए बुद्धि और मन प्रकट किया गया है। बुद्धि तर्क शक्ति से चीजों को समझना, मन है अंधा है, तो मन और बुद्धि के दायरे की वजह से ये अहंकार, जीव भाव और चित्त ये बरकरार है, इनका अस्तित्व बना हुआ है। लेकिन चूंकि ऊपर इतना खिंचाव इतना अच्छा है कूटस्थ का, कि यहाँ रुकना बड़ा मुश्किल है। इससे हमारी बुद्धि और मन और चित्त और अहंकार जो रुका रहे, इससे 5 ज्ञानेंद्रियां प्रकट हुई, 5 कर्म इंद्रियां, 5 तन मात्रा। जब 15 प्रकट हुए तो ठीक है, अब कुछ स्थिरता आ गई, अब जीव भाव बना रहेगा। हमारे परमात्मा में दूरी है, इसको अनुभव करने के लिए इतने संसाधन मिल गए, और यही दूरी है, यही अनुभूति ही समस्त कष्ट का कारण है। फिर क्या है? चलिए तन मात्रा और कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां कहीं परब्रह्म से मिल न जाए, बड़ा आकर्षण है। इससे 5 स्थूल तत्व को प्रकट किया गया। आसमान है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है। इनके प्रकट कर लेने सब निश्चित हो गया, अब परब्रह्म से मिलना नहीं होगा। जब परब्रह्म से मिलना नहीं होगा तो उनकी पूजा करते रहेंगे हम, बस सोच लेंगे कि उनकी तरह हो ही नहीं सकते हैं। इस तरह से एक परब्रह्म इस 24 तत्वों के रूप में व्यक्त हो गए। लेकिन हम सबका लक्ष्य क्या है मानव का? हमारा लक्ष्य सन्यासी बनना। सन्यासी कैसे बन पाएंगे? उसी को कैवल्य अवस्था कहते हैं। कैवल्य अवस्था क्या है? हम कुछ ऐसा करें कि जो परब्रह्म एक अनेक रूप में है, सारे रूपों के साथ हम हो जाएं। किसी रूप से हमारा द्वेष न हो, हमारी तब प्रेम हो जाए, हमारे परब्रह्म में प्रेम का अनंत स्वरूप आ जाए। तो परब्रह्म जो एक अनेक हुए हैं, हम सब रूपों के साथ एक होना चाहते हैं। तो जब हम चित्त से जो परमानंद है, सर्वशक्तिमान अस्तित्व है, वहां से लेकर के पृथ्वी तत्व तक हम सबके साथ हो जाए हम, और सबको इतना सम्मान करें, सभी परब्रह्म हैं। इसी को कैवल्य अवस्था कहते हैं। इस स्थिति को आने को सन्यासी कहते हैं। इसे कहते हैं सन्यासी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब तो पा चुका है, वो तो सभी के साथ है। वो पृथ्वी तत्व के साथ है, जल तत्व के साथ, अग्नि के साथ, वायु के साथ, आसमान के साथ, तन मात्रा, इंद्रियाएं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, सबके साथ तो है वो सर्वव्यापकता का अनुभूति यही कहते हैं। सर्वव्यापकता की अनुभूति में रहना ही सन्यासी की स्थिति है, और यही कैवल्य है। और बड़ी मजे की बात यह है, क्रिया योग करते चले जाइए, इस अवस्था को प्राप्त हो जाते एक ही जन्म में। इससे आज से फिर हम संकल्प लें, हम क्रिया योग छोड़ेंगे नहीं, बस करते रहें। याद रखें, लहरी माँ ने कहा है, बनत बनत बन जाइए। किसी दिन नहीं कर पाए, थोड़ा ही किए, ठीक है, कोई बात नहीं, किए तो याद रखिए, सधर्मम अल्प से त्रायते महतो भयात। इसका अल्प अभ्यास भी बहुत कल्याणकारी है। Sometimes we realize that we are not practicing sufficiently. Do not worry. Remember this saying of Mahatar Babaji. He instructed Lahari Bhasai, if you are imparting this teaching, you will find that somebody is not able to do it. Then tell that disciple, Swadharmam alpasya trayate mahato bhayat. Even little bit practice will help you. इसे हम सबका लक्ष्य क्या है? सन्यासी बनना। सन्यासी जिस तरह से बना जाता है वैसा नहीं। पूर्ण सन्यासी महातार बाबा जी हैं। उसी अवस्था का व्यक्ति किए लहरी महाशय। लहरी महाशय वहां तक जब पहुंचे तो जानते हैं वो महातार बाबा जी एक है। कभी कभी लहरी महाशय एक अपने अलग रूप में आकर के कारण शरीर में आ जाते हैं, फिर महातार बाबा के साथ हो जाते हैं, फिर कारण शरीर में आ जाते हैं। तो कितना आसान है क्रिया योग करना।
सिर्फ इतना भर सोच लीजिए कि परब्रह्म का स्वरूप है अमर सत्य, तो सिर से पैर की उंगली तक किसी अनुभूति को हम अमरता का अनुभूति कहते रहे। आप दर्द होता कैसे कहें, तो आप स्वतंत्र हैं, किसी की नकल न करें। इस तरह से लेटिए, उठिए, बैठिए, चलिए, फिरिए, काम करिए, होने वाले सारी परिवर्तन अच्छे लगे। एक लाख चलो रे, आप अपने में काम करिए, दूसरे की नकल क्यों करते हैं। कोई बहुत तेज दौड़ रहा है, आप बहुत तेज नहीं दौड़ सकते हैं, तो धीरे धीरे दौड़िए, इस तरह से दौड़िए, इस तरह से चलिए कि पैर की उंगली से सिर तक की अनुभूति अच्छी लगे। ये था आज का स्क्रिप्चर। ये थोड़ा सा ये इसका लक्ष्य क्या है, आप अभ्यास करते रहिए। फिर से हम आपको बताना चाहते हैं, लाइव सेशन का एक ही अर्थ है, क्रिया योग जो लहड़ी महाशय से आया, एक सगरी ने उसको व्यक्त किया होली साइंस के रूप में। परमहंस योगानंद करके दिखा दिए, देखिए शरीर हमारी सड़ी नहीं है, हम जा रहे हैं। उस क्रिया योग को सभी लोग जब करने लगेंगे तो पृथ्वी से लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। कोई भी राष्ट्र हथियार नहीं बनाएगा, फिर हथियार बनाने की होड़ खत्म हो जाएगी। अपनी सारी ऊर्जा और शक्ति मिलेगी, कैसे पेड़ों की रक्षा करे, जानवरों की रक्षा करे, नदी और पहाड़ समुद्र की रक्षा करे, हम सब आपस में रक्षा करें। इससे लाइव सेशन का यही एक अर्थ है, एक साथ बैठकर अभ्यास करें। इसे लाइव सेशन आप 1 घंटे के बाद बंद कर देते हैं, क्योंकि बाद में अकेले के लिए करेंगे तो आपको वो आराम नहीं मिलेगा जो एक साथ आप अकेले खाना खाइए, वही खाना 100 लोग एक साथ खाए, उसका स्वाद ज़्यादा मिलता है। तो आप समय निकाल करके लाइव सेशन के लिए बैठिए आप। और आपको दिक्कत होती हो तो आप हम लोग के ईमेल पर अपनी एक एडवाइस भेज सकते हैं कि कौन सा समय चुना जाए कि आप कर लेंगे अच्छी तरीके से, फिर हम लोग प्रयास करेंगे। आई वॉन्ट टू अगेन रिमाइंड यू, पर्पज ऑफ लाइफ सेशन इज दिस, दैट मेजॉरिटी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ, and they will practice Kriyayoga at the same time, we will create a force of truth and non-violence that will give inspiration to all persons of the world that this is unnecessarily work. We are creating, manufacturing weapons for fight, like nuclear bomb, atomic bomb, missiles, so many things. We do not need it. Therefore, these weapons should stop. We'll get an idea. We are going to use all the revenue how to protect trees and animals, how to protect mountain, ocean, lake, river. This is the aim. Therefore, this life session, when you practice together, it will create a good effect. And this earth one day will appear as the place of truth and non-violence. Then we will realize there is no illness, sickness. We will realize we can depart like Paramahansa Yogananda, like Lahiri Mahasaya, like Jnanatarik Tesagiri. This is the aim of this life session. This is for today. Let us practice double breathing with joyful, unified stretching and relaxation. 2 बार में श्वास से प्रश्वास के साथ हम एकाग्रता बढ़ाएं, सारी अनुभूतियों को हम स्वीकार करें। इस तरह से खड़ा करें, पैर की उंगली से सिर तक सब जगहों पर एक समान खड़ापन हो। 2 बार में श्वास निकालते ही एकदम ढीला कर दें। Let us bow down to our devotion we have in Kriyayoga meditation. क्रिया योग में हम अपनी भक्ति को नमन करें। Now we will sit, हम बैठेंगे, आंखें खोलें, open eyes.